Hello students, hope you're all safe. Today I'm going to teach you the second application of dimensional analysis, that is to check dimensional consistency of a given physical relation. You have to pay attention to my words. All that we are going to check is only the dimensional consistency of a given physical relationship. And we will be doing this by using a principle called principle of homogeneity. So here, by making use of principle of homogeneity, we are going to check the dimensional consistency, means whether a given relationship is consistent or correct dimensionally or not. Actually or physically correct or not, that cannot be still verified or scanned to that extent because of some limitations that I'll discuss. So let us start with this. Using principle of homogeneity, we have to check the dimensional consistency. Now, what is principle of homogeneity? In a very simple language, we can say that the dimensionally similar quantities can be added or subtracted. If two quantities have similar dimensions, then only they can be added or they can be subtracted in order to make use of any operation. Now, if two quantities are not similar in dimensions, we cannot add them. For example, putting it in simple terms, force cannot be added to velocity. Work cannot be added to force. Are you getting? Because these physical quantities, they have different dimensions. I cannot add acceleration to force. I can add force to force. I cannot add acceleration to force because they have different dimensions. That is principle of homogeneity. Homogeneity means something which is homogeneous, means only dimensionally similar quantities can be added. Now I will check it for this equation. Now the question is, I have to check whether this equation, this is the given physical relation, and I have to check whether this is dimensionally correct or not. So even though I know that you are familiar with this equation, and you can say outrightly, ma'am, it's correct, but let us apply this principle to check. So on the left hand side, first we have to see what is there on the left hand side. The physical quantity is energy, and the left hand side dimensions, we have to use the dimensional formula for energy, and that is m l 2 to the power. Okay? The left hand side quantity is energy. This is energy. So I am using the dimensional formula for energy, ml square t power minus 2. Now what is there on the right hand side? Right hand side पे I've got two terms. मेरे पास दो terms हैं. Right hand side पे first term है half mv square, जिसका dimensional formula होता है, half is a numerical value. We are not going to deal with it. Mass will have dimensions of m, and velocity to the power 2. Velocity is lt to the power minus 1. So it becomes L square t power minus 2. I hope you are understanding. Velocity is lt power minus 1, and this has to be taken to the power 2. Because velocity का square है, इसलिए dimensional formula of velocity and square. So it becomes L square t power minus 2. And the second part of the second term of the right hand side is mgh. This is total energy, sum of kinetic energy plus potential energy, which you have already learned in 9th and junior classes. So kinetic energy plus potential energy, total mechanical energy. This is mgh, which is potential energy. Let me put the dimensional formula for this. Mass, I'll put as m. G is acceleration due to gravity. So I'll be putting it as lt power minus 2 into h. H is the height or the distance, so it will have the dimensions of length only. So ultimately I'll be using L only. So this becomes ml square t power minus 2. I hope you are getting. This is mass. Acceleration due to gravity has the dimensions L to power minus 2, and height has the dimensions of, say, L. So it becomes L square t to the power. I can put it like this. Acceleration due to gravity has the dimensions L t power minus 2, and height has the dimension of L. So it becomes L square. Now I hope you understood. So what are we concluding? We are concluding that the left hand side and the right hand side, they all have
same dimensions. Dimensionally, this term of energy is similar to the dimensions of half mv square is similar to the dimensions of mgh. That means if I'm adding these two terms, they must be dimensionally similar. If they are similar, that means this equation is dimensionally correct. You can see very clearly left hand side एंड राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है हर एक टर्म का, इसमें तीन टर्म्स है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहे हैं. इसका मतलब है कि ये इक्वेशन, this relationship is dimensionally correct. Here something very important which you have to take note of. Dimensionally consistent equation need not be correct physically. हम सिर्फ ये प्रूफ कर पाते हैं कि एक इक्वेशन वेरीफाई कर पाते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है. सपोज मैं यहाँ mv स्क्वायर की जगह mv क्यूब लगाऊं तो इमीडिएटली यहां पर आपको the moment I put cube, I'll get यहाँ का term change हो जाएगा, this becomes L cube and this becomes t to the power minus 3. तो क्या हो जाएगा, इस term का dimension इस term से different हो जाएगा and we will say it is not dimensionally correct या dimensionally wrong बोल सकते हैं. तो यहाँ हम conclude करते हैं कि dimensionally consistent equation need not be physically correct. मतलब ये equation सिर्फ ये scan कर सकते हैं principle of homogeneity कि वो dimensionally correct है कि नहीं, और अगर फिजिकली करेक्ट है कि नहीं ये हम स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर की जगह अगर 7/9 mv स्क्वायर होता तो भी आपको डायमेंशनली ही करेक्ट मिलता. अगर इफ आई राइट 7/9 mv स्क्वायर देन आल्सो यू विल गेट डायमेंशंस ऑफ दिस टर्म, डायमेंशंस ऑफ दिस टर्म एंड डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, तीनों बराबर मिल रहे हैं, तब भी आपको डायमेंशनली करेक्ट ही बताएगा, क्योंकि ये नंबर को वेरीफाई करने का हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस में प्रोविजन नहीं है. ये इसका वन ऑफ द लिमिटेशंस है कि हम फिजिकली करेक्ट है कि नहीं वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं बता सकते हैं. लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है, सपोज जैसे मैं वापस बोलती हूँ mv क्यूब लिखूं, अगर ये डायमेंशनली रॉन्ग है, क्योंकि द मोमेंट आई राइट v क्यूब यहाँ क्या हो जाएगा आपका l क्यूब आ जाएगा और t टू द पावर माइनस 3. तो इस टर्म का डायमेंशन इससे डिफरेंट हो जाएगा और एनर्जी से भी डिफरेंट हो जाएगा. वो डायमेंशनली रॉन्ग है तो एक्चुअली भी रॉन्ग है. If an equation is dimensionally wrong, it is actually wrong. But if an equation is dimensionally correct, it is not necessary that it is actually correct, but it hints that it may be actually correct or may not be actually correct. So I hope you understood this thing. So this is thing. Using principle of homogeneity, I would like to explain another class of question. ये तो आ गया check करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हर एक टर्म का डायमेंशन अगर सेम है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इसमें दूसरे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो आपको एवरी ऑफ एंड ऑन एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे, वो है अननोन क्वांटिटी या कांस्टेंट्स के डायमेंशन निकालना. जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन सेज वेयर p हमारा टर्म है लीनियर मोमेंटम एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन at² + bt + c, जहां पर a, b और c तीनों कांस्टेंट्स हैं. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया डायमेंशंस ऑफ b निकालिए. हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में आपको कहे कि a/b निकालिए, किसी में पूछा जाए a into b निकालिए. अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इससे हम फ्रेम कर सकते हैं. यू कैन बी आस्क्ड टू फाइंड a/b, यू कैन बी आस्क्ड टू फाइंड a into b, यू कैन बी आस्क्ड टू फाइंड c into a, एनी इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस इससे फ्रेम किए जा सकते हैं. लेकिन अभी फिलहाल हमने जो क्वेश्चन लिया है वो है डायमेंशंस ऑफ b. तो मुझे यहाँ क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि अगर at² और bt और c ये तीनों ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब at² के डायमेंशंस bt से और c से सिमिलर है, या p इक्वल टू दिस. दैट मींस आई एम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि डायमेंशंस ऑफ p शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ bt. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ bt, तभी वो इक्वल आ रहा है. या आप इसको दूसरी तरह से कर सकते हैं, at² का डायमेंशनल फॉर्मूला bt के डायमेंशनल फॉर्मूले से सिमिलर है, क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं इसलिए डायमेंशनली देयर शुड बी सिमिलर. आप तीसरा कॉन्सेप्ट भी ले सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c. मैं ये इसलिए बता रही हूँ एक्सटेंडेड, क्योंकि मुझे तो काम सिर्फ b से निकालने का. लेकिन मान लीजिए आपको, जैसे मैंने बताया कि a/b निकालने के लिए कहा जाए या a into b निकालने के लिए कहा जाए, जहां आपको a b c तीनों के डायमेंशंस का काम पड़े, तो आप इस तरह से उसको प्रोसीड करेंगे. सो डायमेंशंस ऑफ p शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c. at² और bt के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे,
यहां मैं ये वाला पार्ट यूज कर रही हूं सिंप्लीफाई करने के लिए. सो माय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी will be equal to momentum is mass into velocity. Mass is m, velocity is lt power minus 1 divided by dimensions of t. क्योंकि ये bt है, so I'm dividing the dimensional formula of t here to get the dimensional formula of b. So what I'm getting is m l t power minus 2. ये मुझे मिल रहा है आंसर. Dimensions of b are 1, 1, minus 2 in length, mass and time. तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी निकालना है तो मैंने ये यूज किया है और मैंने आपको एक्सटेंडेड भी बताया है सो दैट इन केस आपको कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको बी, ए और सी तीनों के यूजेज हो तो आप ये यूज कर सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए टी स्क्वायर और बी टी के इक्वल होंगे, P का डायमेंशनल फॉर्मूला C से इक्वल होगा, वहां से आप C के डायमेंशंस निकाल सकते हैं और जो भी फोर्थ कमिंग ऑपरेशंस आपसे कहा जाए वो आप कर सकते हैं. इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप ऐसे सॉल्व करेंगे और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरीफाई करेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. बाय.